जुमले की रूह है, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तानी ने जो ट्रांसलेशन में जुमला बताया था ना, जब चाइनीज बहुत सारा बोला था, तो पाकिस्तानी ने उसको अपने ऑडियंस को कहा था कि ये सब बकवास कर रहा है। तो तीनों मर्तबा उसने यही जुमला बोला था कि ये सब बकवास कर रहा है। तो प्रेसी ये नहीं होती कि जो आप कंप्रिहेंशन पैसेज या पूरा का पूरा पैसेज, एक पैराग्राफ आपको मिलता है, एक स्टोरी आपको मिलती है, उसके आखिर में आप लिख लें कि ऊपर सब बकवास लिखा जा रहा था, ये नहीं होता। लेकिन यू शुड नो हाउ टू वाइंड इट अप, हाउ टू समराइज इट, एंड हाउ टू मेक इट कम्पैक्ट इन अबाउट वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। And I hope I'm clearly audible to everybody. I pray that I'm clearly audible to everybody throughout. अच्छा जी, प्रेसी की इंट्रोडक्शन के बारे में, let's go to the introductory part of Presi. Let's understand Presi, right? Presi, it's actually, why is the pronunciation a bit strange? And that is the actual French word passer. Okay, English French में R को pronounce की जाता है. So that is passer in a French form, and that is the French form of the English word precise. सो प्रेसी का मतलब तकरीबन वही है जो प्रिसाइज का मतलब है. व्हाट इज प्रिसाइज? प्रिसाइज इज कंपैक्ट, प्रिसाइज इज एग्जैक्ट, प्रिसाइज इज टू द पॉइंट. So what is a précis? A précis is actually something that is to the point, that is summarized, that is compact, and that has an effect, right? When you rewrite it, that has a better effect in understanding, better effect in comprehending. Okay, that is the gist, the summary, the one third part of the original writing, right? So précis is a summary or a short form of a piece of writing. You should take note that précis retains only the important points. You cannot just recreate all the points of the given passage about which you are going to write a précis. You have to pick up the important points. Now, how to pick up the important points? You have to recognize the essential points. How to recognize the essential point? Before going on to recognizing the essential points, you must understand that a précis has brevity. Précis is brief. Brevity means being brief. And it is concise. Concise means short in form. And it is compressed. Compression is its essence. So, brevity, conciseness, and compression, these three are the essence of a précis. Okay, now you have to seize, you have to capture the essential points of a précis. And then you have to have the ability to express the main ideas in your own words. You cannot take, अच्छा हम जब छोटे होते थे तो हमारे कुछ क्लास फेलोज जो होते थे, बिकॉज प्रेसी पेपर ये 9-10 में हमें फेडरल बोर्ड से मैंने पढ़ा है, तो फेडरल बोर्ड में 9-10 के पेपर में प्रेसी का एक क्वेश्चन होता था, प्रेसी का. सो प्रेसी में कुछ दोस्त बाहर निकल आते और वो कहते थे कि यार मैंने तो 10 सेंटेंसेस का पैसेज था, तो उसको मैंने दोबारा इस तरह से लिखा कि मैंने अकड़ बकड़ बम्बे कोड़ासी नवे पूरा 100 पढ़कर जो सेंटेंस जिस पर पूरा 100 आ जाता था, उस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया, फिर अगले 2-3 सेंटेंसेस छोड़कर फिर एक अकड़ बकड़ पढ़कर 2 सेंटेंसेस को पर के ऊपर जिस पर 100 आ जाता था पूरा 100, उसको अंडरलाइन कर देता था, फिर तीसरी मर्तबा यही कुछ करता था. सो आई वुड रैंडमली पिक 3 सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. वो मेरा एक दोस्त था, वो कहता था आई वुड पिक 3 सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, और वो 3 सेंटेंसेस में लिख लेता था, वो प्रेसी होता था. तो इस तरह नहीं होता कि आप ओरिजिनल पैसेज में से कोई 3 सेंटेंसेस ले लें. 10 सेंटेंसेस का एक पैसेज है, तो 3 सेंटेंसेस आप ले लें और वो 3 सेंटेंसेस आप रख दें कि प्रेसी में कि दिस इज द प्रेसी, दिस इज नॉट द प्रेसी. यू हैव टू एक्सप्रेस द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज ऑफ द पैराग्राफ in your own words.
That would be your pressing. All right. What are the essentials of an effective pressing? Pressing, ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रेसे हो ही ना, गलत हो। मेन पैसेज आपका प्रेसे उस वक्त गलत हो सकता है कि वो अबाउट 1/3 लेंथ का नहीं है। अबाउट 1/3 लेंथ मैंने इसलिए कहा कि उसमें 2-4 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप गिनकर उतने ही 1/3 आपने गिने कि भाई 90 वर्ड्स का एक पैसेज मुझे मिला है, तो आप उसको जरूरी है कि 30 वर्ड्स में ही समेटेंगे। अगर आपका 31 वर्ड्स हो गए या 32 वर्ड्स हो गए तो वो गलत है, या 27 वर्ड्स हो गए तो वो गलत है। 2-4 वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू टेक द मेन आइडिया एंड एक्सप्रेस इट इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेसे? प्रेसे आपका हो गया, ठीक है, लेकिन आपने एक इफेक्टिव प्रेसे लिखना है। So what to include in an effective pressing? What things you should include? So ये इसका you take note. ये main जरूरी चीजें हैं. These 5 ingredients are the basic things what you should include in an essay. Practical examples हम बाद में जाएंगे उनकी तरफ, पहले हम इसको देख लें कि what to include in your pressing. Okay. First of all, your pressing should have the leading thoughts and the general impression of the passage summarized. देखिए, आपको जो पैसेज मिलता है, the passage you're getting to write a essay about, that has got some leading thoughts, that has got some leading themes, that has got more than one topic sentences. You'll have to find those leading thoughts and you'll have to take the general impression. These are two different things. To take leading thoughts, you will confront leading thoughts of the passage after every couple sentences. एक पैसेज है, उसके 1-2 सेंटेंसेस के बाद आपको उनके लीडिंग थॉट्स मिलेंगे। पैसेज में हर एक थॉट लीडिंग नहीं होता। Some thoughts are supportive, some thoughts are minor, some thoughts are extra fringes to the leading thought, and there will be some rare leading thoughts over there. You have to just grasp those leading thoughts first of all. The second thing is, then you will take a general impression of the essay, of the passage. General impression of the passage is very important because first of all, it's very important that you should know what is the basic theme of this passage I'm getting. What is the basic and main idea of this passage about which I have to write a essay. General impression लें और उस जनरल इंप्रेशन से रिलेटेड लीडिंग थॉट्स उसमें जितने हैं, लीडिंग पॉइंट्स, वो लें फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको इंक्लूड करें. The other thing is, it should be a continuous and compact piece of prose. Continuous and compact. Compact तो हो गया, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया. You have to write a compact. Compact का मतलब है मुख्तसर होगा. Compact का मतलब है वो as a whole होगा, pieces में नहीं होगा, लेकिन मुख्तसर होगा. And the other thing is कि continuous का मतलब यही है कि it should not be broken into pieces. The ideas shouldn't be haphazard. The ideas shouldn't run away from each other. You should combine the ideas into one compact paragraph. यानी आप एक पैसेज का प्रेसे लिखें, so passage आपको जब भी मिलेगा, that would be in the form of a compact paragraph. एक linked paragraph की सूरत में होगा. एक लॉजिकल ऑर्डर में पैराग्राफ आएगा, लॉजिकल स्टोरी होगी, लॉजिकल प्रॉब्लम होगा, पीस ऑफ आर्टिकल होगा, जिसका स्टार्ट होगा, जिसका अपना एक स्टार्ट होगा, जिसका अपना एक बॉडी होगा, जिसका अपना एक एंड होगा, कंक्लूजन होगा. आपने जो उसका प्रेसे लिखना है वो भी उसी तरह होना चाहिए, जिसका एक स्टार्ट हो, जिसका एक बॉडी हो, जिसका एक कंक्लूजन हो. दैट शुड बी अ कंपैक्ट पैराग्राफ, नॉट अ हैphazard सेंटेंसेस. आप ये नहीं कि कुछ सेंटेंसेस मिलाकर आप कह दें कि ये प्रेसे है और उन सेंटेंसेस का आपस में कोई ताल्लुक ना हो. They shouldn't be connected with each other. That shouldn't happen. The third thing should be clear in your own words. Don't make it complex, please. ये जरूर पॉइंट याद रखें. Please note it with yourself that the essay that you are writing should be easier to understand than the original passage. I repeat, the essay that you are writing should be easier to understand
than the original passage which is given in the question paper. क्वेश्चन पेपर में जो ओरिजिनल पैसेज लिखा हुआ है उससे आपका प्रेसे अंडरस्टैंड में इजियर हो, और ये इजियर उस वक्त होगा व्हेन यू विल बी यूजिंग योर ओन वर्ड्स. If you're copying phrases and expressions and illustrations from the original passage, you won't be understandable. You won't be comprehensive. You won't be comprehensible. Nobody will comprehend your presi. क्यों? इसलिए कि जो ओरिजिनल पैसेज होगा वो आपकी प्रेसी से 3 times बड़ा होगा लेंथ में, और लेंथ में बात करके लोगों को समझाना आसान होता है, ब्रीफ फॉर्म में बात करके लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो आपसे कहा जाता है कि आप एक पैसेज को ब्रीफ भी करें, उसको दरिया को कूजे में भी बंद करें, चंद अल्फाज में भी करें, और ऐसे करें कि लोगों को पैसेज ओरिजिनल पैसेज से ज्यादा आसानी से समझ आए. तो इसका मतलब यह है कि आप उसको सिंपलर वर्ड्स में लिखेंगे. You'll write them in your own words, and you'll write them in a precise form, in a compact form, and you'll write them what is essential. You'll put what is essential, and you'll omit what is extra. That's इसी तरह आपका प्रिसाइज होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए. ये बात हो चुकी है. मुख्तसर हो, टू द पॉइंट हो, और ब्रीफ हो. एंड देन इट शुड हैव अ बैलेंस एंड प्रोपोर्शन. मैंने आपसे पहले कहा कि बैलेंस और प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू आर राइटिंग हैप्पी सेंटेंसेस, योर प्रेसी will lack balance and lack proportion. अच्छा जी, ये तो चीजें थी what you should include in a précis. अब मैं आपको बताता हूँ what should you avoid in a précis. कौन सी चीजें अवॉइड करें? इंक्लूड करने से ज्यादा अवॉइड करने वाली चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप वो ऐसे में ना, एक प्रेसी में ना करें. जब भी मैं कोई कंपोजिशन का पेपर चेक करता हूँ तो जो प्रेसी होता है उसके पार्ट में स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्क्स उनके कटते हैं. तो अमूमन उनकी मिस्टेक्स ये नहीं होती कि उनको कोई चीज इंक्लूड करना थी उन्होंने नहीं की. इंक्लूड करने वाली चीजें थोड़ी हैं. यानी ये बंदा सीख ले कि आई हैव टू राइट 1/3 ऑफ द पैसेज, एंड आई हैव टू राइट इन माय ओन वर्ड्स, एंड आई हैव टू राइट इन सिंपलर वर्ड्स, एंड आई हैव टू राइट इन मोर इनडायरेक्ट फॉर्म. ये तो इजी है. लेकिन जो अवॉइड करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से अच्छी भली प्रेस खराब हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड योर ओन कमेंट्स. देखें, when we were taking the essay lecture, I don't know how many of you were there when I was teaching you about essay. So मैंने आपसे कहा कि essay includes your own comments. Essay is very much subjective. Essay can have your own opinions. आप अपना opinion put up करते हैं essay में. आप अपनी subjectivity. You are there. The author is there. The writer is there. The creator is very much there. From an essay, we can take the mood of a creator. From a story, we can take the mood of a creator. But from a piece of pressy, we shouldn't have any idea about who has written it and what are his opinions about this particular subject. आपने अपने कोई comments नहीं देने, आपने extra कोई बात नहीं करनी. You have just to summarize that passage. बस. You have just to write a pressy of that passage. आपने अपना कोई भी comment put up नहीं करे. You don't have to put up any comment of your own. That is the essence of a good pressy. Avoid your own comments. You cannot put up any comment which is not in the original passage, and you have added it in the pressy. That you should avoid. Number 2, avoid borrowing phrases and sentences from the original. Please, unless it is extremely necessary, please avoid to take passages and sentences and quotations and verses, if any, and illustrations, if any, from the original passage. There shouldn't be any one phrase or any one sentence that is contained in the original. I'm not talking about words. Even the words should be your own. But there must be some words which are unavoidable and which will be repeated in your pressy.
you'll be looking at the examples further. I'm coming with the examples. I'm sorry, but there will be phrases which you'll need to rephrase in your own words. There will be sentences which you need to rewrite in your own sentences. So the phrases should be rephrased and the sentences should be rewritten in your own sentences. Don't copy any sentence or any phrase from the original passage. The second thing, first of all, avoid your own comments. The second thing, avoid copying, borrowing phrases and sentences from the original. The third thing, avoid exceeding the prescribed length by more than 5 to 10 words. This is the limit. आगे पीछे 5 से 10 अल्फाज आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं. 5 तक गुजारा है, 10 तक थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं. Don't exceed the prescribed length. आप थोड़ा सा prescribed length से जो prescribed length which is given, आप ये hard and fast rule समझ लें कि a précis is about 1/3 length, right? An original passage of 90 words should be compacted and should be limited to how many? 30 words, right? So इसमें आप 40 words तक जा सकते हैं, आप 25 words तक कम हो सकते हैं, 20 words तक कम हो सकते हैं. Essence ये है कि you should not lose the main ingredient and you should not go for the unnecessary detail as well. Two things you need to be very careful. First of all, you should not lose the main ingredient, and the second thing is you should not go after much detail, after unnecessary detail. That is the thing. Okay, the fourth thing to avoid is avoid bad style. Your sentences should not lack unity. You should not write sentences, as I told you earlier, you should not write sentences in your précis. You should write a paragraph as a précis. Your précis is the summary of a given passage. Your précis is the compact form of a given original passage. So your précis should not be a collection of sentences, haphazard sentences, which lack unity. It should have a unity of structure and it should have a unity of theme as well. And the last thing to avoid is avoid colloquial expressions. What are colloquial expressions? Yani wanna be and gonna be and they're gonna be वगैरह वगैरह जो आप spoken English में बोलते हैं, जो बगैर structure के English होती है, जो certain structure उसका सही नहीं होता, जो compact form में होती है, जो colloquial form में और abstract form में लिखी जाती है, block languages होते हैं, that should be avoided. Colloquial expressions should be avoided. Your précis should look like a piece of writing. It shouldn't look like something you have spoken and then spoken का जो script है वो सामने आया हुआ है. That should not be a script of your spoken. That should be a good piece of writing. ठीक है? All right. एक minute. Please give me a couple of seconds. All right, thank you. Okay. So avoid colloquial expressions. All right. These are the essentials of avoiding what should be in a précis. All right. Okay. Now, there are some details which you should never include in a précis. The following details are not included in a précis. Number one is
All introductory remarks. Your précis is just a gist or a precise form of an original passage. It should not include introductory remarks. As I said, it has got a body, the introductory body, the main body, and the conclusion. But it should not have introductory remarks like you are putting introductory remarks or quotations or sayings, something like that in an essay. So it's unlike an essay, and you should avoid introductory remarks first of all. Number two is illustrations. Illustrations are examples like a reference to the historical facts or reference to the Quran, reference to some writer, quotations of some people. So examples, illustrations, anecdotes, stories, these should be avoided. Similes and metaphors should be avoided. Figures of speech, most of the figures of speech which are used in the original passage should not be used in a précis. A précis is simpler, a précis is more direct, a précis is more understandable. So you should not put many metaphors, you should not put many similes. तो जो डायरेक्ट बात होती है वही करें. तो अक्सर idiomatic and metaphoric language is used, similes are used in original passage. You should try to avoid similes and metaphors. We'll be doing some of the examples of these. And a repeated statement should also be avoided. Sometimes you get an original passage in which in which a couple of statements or a statement is repeated. Please try to avoid the repetition of a statement. If it is repeated in an original statement, you should not repeat it in a précis. Once said, that is enough, right? Just say it once, but say it properly. Okay, so you've gone through what to avoid in a précis, what to include in a précis and what to avoid in a précis. My voice is again. I before going further, I'd like to confirm if my voice is clearly audible. सुनाई दे रहा हूँ मैं सबको. दूसरी तरफ पुरस्कार खामोशी है, तो मुझे लग रहा है I'm just the only one in the room. Am I audible? जी सर, ये आवाज क्लियर आ रही है. बहुत ज्यादा खामोश बैठी हुई है. इतनी खामोश ऑडियंस मैंने कभी भी नहीं देखी. They are very well behaved. बच्चे क्यों खामोश बैठे हैं? कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे ना. वो वेल बिहेव किड्स है. चले आखिर में मैं इनसे पूछूंगा. आखिर में मैं पूछने वाला हूँ. अभी थोड़ी देर बाद मैं पूछने वाला हूँ. I'm not letting them keep quiet for long. Okay. बच्चे फिर सोच के रखें क्वेश्चन सर के लिए. जी जी जरूर. मेरे लिए भी क्वेश्चन सोच के रखे. मैंने तो सोच के रखा हुआ आपके लिए. क्वेश्चन अभी आ रहा है, स्लाइड में ही आ रहा है. चले. ये सर. ओके राइट. नाउ वी गो ऑन टू फॉर अबाउट द. मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा चीजें कम वक्त में वो हों, लेकिन मिस भी ना हो. ये प्रेसी के बारे में लेक्चर है, प्रेजेंटेशन है, और बाय नो मींस इट्स इन अ प्रिसाइज फॉर्म. ये खुद प्रेसे किसी भी सूरत नहीं हो सकता. प्रेसे के बारे में लेक्चर का प्रेसे नहीं बन सकता. उसको जितना कम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता है उतना अच्छा है. ऑलराइट. सो प्रोसीजर ऑफ प्रेसी राइटिंग. What is the procedure of प्रेसी राइटिंग? आप एक प्रेसी राइटिंग की तैयारी कैसे करते हैं? प्रेसी राइटिंग शुरू कैसे करते हैं? प्रेसी राइटिंग से शुरू करने से पहले क्या कुछ करना चाहिए? What you should do. सबसे पहले तो you should know what to include and what to avoid in a प्रेसी. That you have known, that you have taken note of. इस लेक्चर के अदनान साहब, I think you have made sure कि इस प्रेजेंटेशन की और इसकी ये ऑडियो की कॉपी इनको प्रोवाइड हो सकती है, तो that would be a good thing. Alright. Sure सर. रिकॉर्डिंग चल रही है तो इंशाल्लाह ना हम फिर अपने पेज पर लगा देंगे इंशाल्लाह. That's great. मैं चाहता हूँ कि इसको इन स्लाइड्स को ये लोग दोबारा एक नजर देख भी लें तो इनको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. So what are the हम कन्वर्ट करके फिर भेज देंगे. Good. Thank you. ये टेक्निकल पार्ट ये आप लोगों ने संभाला हुआ. अदनान साहब से आप लोग कनेक्शन में रहें. इंशाल्लाह he'll be providing you the stuff. So, sure, sir. Inshallah. Okay, thank you, sir. All right. So, procedure of précis writing. So, first of all, the first thing is reading. Don't read it once. ये mistake नहीं करना, ये गलती नहीं करना. मैं अपनी academic career में English को बड़ा easy लेता था because English was my most favorite subject from the early childhood. So ये mistake मैं करता था. मैंने ये mistake की. मेरे ख्याल में ये
FSC के पेपर में, आई थिंक दैट वाज FSC का पेपर था इंग्लिश का, कि I didn't read it three times. I read it once and I couldn't get as much as I could do, right? So please, जिस चीज को भी आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, एटलीस्ट रीड इट थ्री टाइम्स आप उसको पढ़ें. आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने कुरान पाक का मुताला किया होगा और ट्रांसलेशन भी पढ़ी होगी. कुरान पाक में अल्लाह ताला रिपीट करता है बात को. बहुत सारी जगहों पे 3 टाइम्स रिपीट किया हुआ है, बहुत सारी जगहों बहुत सारी टाइम्स रिपीट किया हुआ है. व्हाई इज रेपिटिशन नेसेसरी? अल्लाह ताला का दस्तूर है कि वो किसी बात को स्ट्रेस करता है तो उसको रिपीट करवाता है इंसान से. So that is the fact that our mind is set up with understanding in repetition. ठीक है, हम जब repeat करते हैं we understand better. So when you get a passage, an original passage, you should have you should have read it at least 3 times, and after reading it for 3 times you will get a general idea of a passage. After reading it 3 times you will have a general idea. Read it once, you will get some idea. Read it again, you will understand the passage more. And read it for the 3rd time, you will pick up the general idea and you will pick the key notes and the key thoughts of the passage, original passage, that you have to present in your pressing. The second thing is, reading hurriedly is just not enough. That's true that in CSS examination, you need to be very much aware of the time, beware of your time, because time management is very much important in CSS. But if you are good in writing and you have practiced writing, if your writing speed is marvelous, up to the mark, then you can take your time in reading an original passage in a detailed way. And you should also know how to speed read. Speed reading is also another of the good habits that a good student has. So try to understand what speed reading is and try to learn about speed reading. So when you have read or speed read the essay, the original passage, you should have a detailed study of it. What is a detailed study? Some studies are done which are just like Francis Bacon has a very beautiful quotation that some books are to be tasted, others to be swallowed, and some more to be chewed and digested. That is a beautiful quotation. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some more to be chewed and digested. So likewise, I'll say, so there are some passages which need to be tasted. When you're reading a newspaper, so you taste a lot of passages in the newspaper. You taste a lot of news and a lot of articles in the newspaper. You just take a general taste of it. I'm sorry. And then in the newspaper, there are some passages and some articles which you just swallow. You hurriedly go through them and you swallow them. That's for your benefit. You have learned about them. That's all. And there are some articles which you need to be chewed and digest, which you need to, what is chewing and digesting? बार बार एक चीज पर मुंह मारने को चीविंग कहते हैं. चबा चबा कर टुकड़े टुकड़े करके पीस बाय पीस खा जाना उसको, हजम कर लेना उसको. आपका जो ओरिजिनल पैसेज है जिसकी आप प्रेसी लिख रहे हैं, वो इसी तरह चीविंग से ताल्लुक रखता है. You need to understand it sentence by sentence and word by word. एक एक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. Each word needs to be comprehended. Each sentence needs to be understood. Now the third thing is, first of all, reading. The second thing is detailed study. The third thing is selection. Select the essential, find the main theme, brush aside the irrelevant. An original passage will not contain every word that is necessary to you, will not contain every sentence that is important to you to mention.
in your précis will not contain every passage or every phrase that is unavoidable. That is your mastery, how you are going to select the essential, how you are going to find the main theme, the main idea, and how you are going to brush aside. Brush aside ka matlab hai delete, omit, ignore the irrelevant pieces, the irrelevant parts, the irrelevant words, the irrelevant sentences, the irrelevant phrases. The fourth thing is you should not only depend on first draft, you should write first, second, and third draft. First of all, write your rough drafts, not one rough draft. What is a rough draft? You are reading an original passage and you are required to write a précis of it. Take out your pen, just go to the rough page. At the back of your page, you can make that page into a rough page. Just write a point-wise summary of the main ideas. You have written point-wise summary of the main ideas. Maybe you have got too many points. Maybe you get a passage, and when you start writing point-wise summary of the passage, you get some 25 to 30 points. Now, when you look at those 25 to 30 points, they won't make you a good précis, because when you will be developing these 25 to 30 points into paragraph form, into a précis form, your précis will far exceed the required prescribed length of précis. So what should you do? This is your first draft. Take out as many main points from the original passage as you can. And then select from these main points. Then shorten up the first draft. How to shorten up the first draft? You have taken up main points, and if these main points are too many, you can take out other main points from the major main points from these main points. In those main points, there will be some major main points and some minor main points. Take out only the major main points from those. Just write them again, the major main points. Then in the third draft, in the final draft, you are going to attempt to write a précis. And when you have written the final draft, look at it and see where it's in logical order. It has got the unity of theme. It has got the unity of structure. It has got the prescribed length. Just put it on your answer sheet. That is the way. The fifth thing is you are almost always required to find a title of your précis. Now, this title will be the title of your précis, and that précis will belong to the original passage. So find your title in the original passage. Where are you going to find the title? How are you going to find the title? You have read the original passage for 3 times as advised. So when you read the passage for 3 times, you will try to look out for the key sentence as well. Maybe you find more than one key sentences. Maybe you find 3 or 4 key sentences, 3 or 4 sentences which seem to be suitable titles to your précis. Just write them down, all the 3 sentences. Find the phrase or short sentence that will sum up the main idea. Okay, right, you have found one sentence. It's not necessary that the whole sentence should be copied from the original passage. You can rephrase the sentence. First of all, write that sentence. Then you have found another sentence, write the second sentence. Then you have found a third sentence that is also suitable to be the heading of your précis. Write down that third sentence as well. Now look at these 3 sentences or 4 sentences that you have chosen, that you have selected. Find the shortest and the most appropriate and the most amicable sentence of these all, which has got short sentence, which has got short phrases, which has got lesser words, and which is more forceful. Just screen in that sentence and put it as the title of your précis. That is the way. So that is the procedure of précis writing. Okay. Now, some specific guidelines for writing for précis writing.
and I've given some examples as well. मैंने कहा था अदनान साहब, मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएंगे. So here comes the question. Before going to the question, the first thing Okay, is sir. the first guideline is uh, when a list of things is given in the original, a general word should be used to express the idea. मैं मुख्तलिफ आपको sentences बता रहा हूं, और वो sentences जो हैं वो मुख्तलिफ original passages से लिए गए हैं, जो प्रेसी के लिए passages दिए गए थे. Now this one sentence जिसका heading है original, so this one sentence is also one of the sentences of original passages which were given for pressy purpose. तो first tip है, specific guideline है, first guideline है, वो ये है कि when in an original passage, sometimes there is a list of things. Now, you don't need to copy that list of things in your pressy because you don't have enough room. आपके पास जगह तंग है, जगह कम है, ठीक है, आपके पास जगह कम है. आपको सपोज आपको 10 बॉल्स दी गई हैं, बॉल्स दिए गए हैं, और आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 3 बॉल्स रखने की जगह है. सो उन 10 बॉल्स को 3 बॉल्स की जगह पे आपने रखना है. तो कैसे रखना है? तो जाहिर है बॉल्स में से थोड़ी थोड़ी सी हवा निकाल के उनको फिट करके उनको सही तरीके से फिट करके वहां पे आप रखेंगे. तो उसमें बहुत सारी चीजें आप निकालेंगे. तो हवा कहाँ कहाँ से आप निकाल सकते हैं? तो ये हवा निकालने वाली बात है. यहाँ मैं आपको एक हवा निकालने वाली तरतीब बताता हूँ, तरीका बताता हूँ. When there's a sentence or a couple of sentences in the original passage where a list of things is given, you don't need to copy that list of things. If these list of things belong to a general category and a general word could suffice for that, you should write a general word for that. अब यहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, राइट? नोट कर लें अपने पास, लिख भी लें या इस सेंटेंस को देख लें, whatever way you can, but you should write the answer now. I'm giving you some time. I'm going to give you a couple of minutes. Original sentence देखें. Original sentence है carpenters, blacksmiths, tailors, shoemakers, and those engaged in similar other trades had assembled the